द रशिया चाइना इंडिया स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल ए न्यू अलायंस। मुझे नहीं लगता ये वेस्ट में जो इस प्रकार की वीडियोस बनाते हैं, इस प्रकार की न्यूज़ रिपोर्ट बनाते हैं, इन्हें ज़्यादा कुछ पता होता है। ये बस सुनी सुनाई बातों को वापस दोहराते हैं। पर देखते हैं यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। And has instead started buying Russian oil on the cheap, while China has parroted Russia's पर अमेरिका भी खरीद रहा है इस समय। पहले जितना रशिया से तेल लेता था उससे अधिक तेल ले रहा है अमेरिका भी। यूरोप के देश भी अधिक ले रहे हैं। अब वापस कह रहे हैं कि हम कम करेंगे। narrative about NATO expansion and criticizing the US for stoking tension in the region. So in this video we're going to be taking a look at the Russia-India-China strategic triangle, the current state of relations between the trio and how the relationship might evolve. हमें रशिया को निर्भर नहीं होने देना है चीन पे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उनकी जितनी निर्भरता चीन पे हो उतनी हमारे पे भी हो। यानी कि इस समय तो रशिया का अधिक झुकाव चीन पे है, परंतु हमारी प्राथमिकता सदा रहनी चाहिए कि जब युद्ध की स्थिति आए तो वो हमारे विरुद्ध भी नहीं होनी चाहिए, हमारे पक्ष में बेशक ना हो, वो भी समझा जा सकता है। न्यूट्रल वाली स्थिति भी समझी जा सकती है, वो भी ठीक होगी, पर हमारे विरुद्ध तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इस बात की पुष्टि करनी है हमें। तो हमारा संबंध बना रहना चाहिए रशिया के साथ। So let's start with the current state of relations. Broadly, while Russia has relatively good relations with the other two, China and India don't really get on. When it comes to Indo-Russian relations, the two have basically been friends since India and the Soviet Union signed the Treaty of Peace, Friendship and Cooperation in 1971. This was India's first bilateral treaty and acted as a counterbalance to Russia भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा भी नहीं करता है। बाकी हमारे जो संबंध है दूसरे देशों के साथ, अमेरिका वगैरह, अमेरिका की सरकार तो हमारी मित्र है, पर वहाँ का इकोसिस्टम हमारा शत्रु है। वहाँ की मीडिया भारत के विरुद्ध दिन रात प्रोपेगेंडा करती है। रशिया से तुम्हें कोई प्रोपेगेंडा देखने को नहीं मिलेगा। एक बार एक प्रोपेगेंडा थोड़े दिन पहले हुआ था, इन्होंने कश्मीर पे एक डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाने की बात की थी, वो भी तुरंत हटा दी। इनके डिप्लोमेट वगैरह ने भी उत्तर दिया उस चीज़ का, तो तुरंत इन्होंने स्थिति पे नियंत्रण लिया। भारत के विरुद्ध ये कुछ भी नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं ये कि हमें भारत के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना है, भारत का समर्थन करना है हर चीज़ में। मतलब हर चीज़ में नहीं, पर जो की इशू है हमारे कश्मीर वगैरह या उस प्रकार के यूएनएससी में रशिया में हमारा सदा साथ देता है। Merging Pakistan-US-China alliance. Even when the Soviet Union collapsed, Russia and India maintained strong relations, and in 2000, Putin and then Prime Minister Atal Bihari signed another treaty, the Strategic Partnership, which was renamed the Special and Privileged Strategic Partnership in 2010. Russia has also stated that it supports India receiving a permanent seat on the United Nations Security Council and is one of the few countries that supports India's claim over Kashmir. The foundation of this partnership has been military hardware. Somewhere between 70 and 80% of India's arms imports comes from Russia, making it Russia's biggest arms market. And most of India's military hardware today is basically old Soviet or Russian stock. While they don't do that much commercial trade with one another, both countries apparently want this to change. In 2015, Putin and Modi set a target. हमारा ट्रेड पहले से ही बढ़ चुका। मैं प्रशांत उनकी वीडियो देख रहा था एक दो दिन पहले, उसमें मेनली अधिकतम इंपोर्ट है, उसके बाद अधिक जानकारी बाद में पता चलेगी हमें, पर अभी बहुत अधिक ट्रेड बढ़ने वाला है रशिया और भारत के बीच। $80 billion in bilateral trade by 2025, up from $10 billion today. These warm relations, combined with India's long-standing policy of neutrality, helped explain why India has been so reluctant to criticize Russia's invasion of Ukraine or join in with Western-led sanctions. When it comes to Sino-Russian relations, while the two weren't friends back in the days of the Soviet Union, relations have rapidly improved in the 30 years since. China and the Soviet Union really didn't get on. The two sides actually fought a brief border war in 1969, and China supported the Afghan Mujahideen against the Soviets during their invasion. Nonetheless, since the collapse of the Soviet Union, relations have rapidly improved. In 2001, they signed the Treaty of Good Neighbourliness and Friendly Cooperation, which includes something that sounds a lot like a mutual defence clause in Article 9, and was renewed in 2021. Sino-Russian relations are motivated by a mutual distrust of the West and good personal relations between Xi and Putin. As with India, there's also a military element. China used to buy a lot of military hardware from Russia, although exports have declined from their peak in the early 2000s as China has developed its own domestic industry. But while India and China are pretty friendly with Russia, they're not so keen on one another. Despite strong trading relations, China is India's largest trading partner, with bilateral trade totaling $95 billion last year. 100 बिलियन से ऊपर जा चुका
लगभग 110 बिलियन या उसके आसपास है अभी इस समय, Sino-Indian relations या उससे भी ज़्यादा, मुझे ठीक से याद नहीं। have been strained by an ongoing border dispute. China and India disagree over the territorial status of Aksai Chin, an area administered by China as part of Xinjiang and Arunachal Pradesh, an area administered by India. The two sides have fought 3 wars over the territories: the Sino-Indian War of 1962, the border clashes in 1967, and the 1987 standoff. In the summer of 2020, there were further skirmishes around the Galwan Valley, resulting in the deaths of 20 Indian soldiers and an unconfirmed number of Chinese soldiers. लगभग 40। India also doesn't like China's close relationship with Pakistan, China की मृत्यु, and China वाला while भी। the two countries do a lot of trade, there's an uncomfortable trade imbalance. India's trade deficit with China hit about $70 billion last year, which means that most bilateral trade involved India importing Chinese goods, which doesn't sit well with Indian economic nationalists and has provoked concern in India about an over-reliance on Chinese goods. So that's the current state of relations. Now you might be wondering, why are we doing a video on this now? Well, we decided to make a video on this now because so far this arrangement has worked pretty well for Putin. In maintaining friendly relations with the 2 most populous countries in the world, Putin has to play a delicate balancing act. But so far he's done pretty well. China and India have lent credibility to Putin's narrative that NATO are really to blame for the war, and both countries have continued to buy Russian energy exports. However, as the war continues, this delicate balancing act, and specifically the India-Russia relationship, will come under increasing strain. India-Soviet relations deepened in the 1960s and 70s due to a shared concern about China, and Delhi has always wanted Russia to serve as a counterweight to China in Eurasia. Unfortunately for India, Russia looks like it will become increasingly dependent on China, which leaves India in an uncomfortable spot. If India decides that Russia तो और भी अधिक आवश्यकता बढ़ जाती है ना भारत की, कि रशिया से दूर नहीं जाना। इस समय रशिया को बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है, उन्होंने भारत से भी मांग की है। कंपनी वगैरह भी जो रशिया छोड़ के भाग रही हैं, वहाँ पे हमारा स्थान खाली है, भारत की कंपनियाँ सीधा वहाँ पे जा सकती हैं और अपना सामान बेचना शुरू कर सकती हैं, और बेच भी रही हैं, अभी शुरू भी हो चुकी। एक आध चुत्तर सी कंपनियाँ हैं जो कमज़ोर सी हैं, इन्फोसिस जैसी, वो उन्होंने अपना बिजनेस ही बाहर निकाल लिया रशिया से। वेस्ट के दबाव में, यूके वगैरह में उनकी कोई बेटी है उसकी शायद, जो उसका ओनर है कंपनी का, ऋषि सुनैक की पत्नी, उस पर बहुत सारे आरोप लग रहे थे कि उसके रशिया के साथ संबंध है, तो पूरी कंपनी ने रशिया से पुल आउट कर लिया। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि ये कंपनी यदि भारत की है इन्फोसिस, तो भारत के हितों को क्यों नहीं ध्यान में देती, अपनी कंपनी के हितों को क्यों नहीं ध्यान में देती। कंपनी का काम क्या है भाई, प्राइवेट कंपनी का अधिक से अधिक पैसा कमाना और अपनी कंपनी की ग्रोथ देखना, लेकिन उसको सोचे समझे बिना सीधा रशिया से पुल आउट कर लिया। पता नहीं भाई, जो है सो है। पर रशिया के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। वेस्ट के साथ हमारा अधिक झुकाव बन रहा है इस समय, पर उसके साथ साथ ही हमें रशिया पे भी ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर रशिया पूरा चाइना की ओर झुक जाएगा। जो हम चाहते हैं ना, युद्ध की स्थिति में यदि हमारे पक्ष में भी ना हो ना रशिया, तो कम से कम न्यूट्रल तो हो, हमारे विरुद्ध भी ना हो। इस बात का हमें ध्यान देना होगा। उसके लिए संबंध बनाए रखने होंगे रशिया के साथ अच्छे। No longer be counted on to counterbalance China, then Delhi will essentially have 2 options. और यूएनएससी की परमानेंट सीट भी है इनके पास। बहुत सारे विषय जिन पे दूसरे देश वोट नहीं करेंगे भारत के पक्ष में, वहाँ पे रशिया करेगा भाई, आंख मीच के करेगा। कश्मीर जैसे विषयों पे हमारा साथ देगा, दूसरे देश नहीं देंगे, अमेरिका नहीं देगा, यूके नहीं देगा। Counterbalance China, then India will probably have to lean away from Russia and towards the West and the US. This seems to be the direction that it's headed in. India has dropped references to legitimate security interests of all sides and stopped framing the war as a Russia-NATO problem, while statements at the UN and in the Indian Parliament have taken on a more critical tone, with the Foreign Minister stating that India is strongly against the conflict. India's other option, though, is to instead commit to its relationship with Russia while simultaneously trying to improve relations with China. Now, we should say that this is an unlikely outcome, largely because Sino-Indian relations aren't in a great place at the moment, and Modi has generally leaned towards the US instead of Russia, but it's worth mentioning because it would be geopolitically interesting. The idea of a Russia-China-India triangle as a counterbalance to the US was first proposed by Russian Prime Minister Evgeny Primakov ऐसा in the कोई 90s. ट्रायंगल नहीं बन रहा अभी के लिए। ये जो बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल भी है, ये वीडियो भी है, पर ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा अभी के लिए, क्योंकि चीन के साथ हमारी मित्रता नहीं। किसी भी ऐसे स्थान पे हम बैठना नहीं चाहते जहाँ पे चीन भी हो। इस समय भी चीन की सेना भारत के बॉर्डर पे खड़ी है, भारतीय सेना अपनी साइड खड़ी है, मतलब पीस टॉक हो रही है, पर ज़्यादा कुछ उनका अंत निकल के आ नहीं रहा।
बिल्डअप दोनों तरफ चालू है अभी के लिए। तो चीन के साथ अच्छे संबंध मुझे नहीं दिख रहे लंबे समय तक। And while it's never really took off, India's anxieties about relying on an ever more temperamental US mean it's a possibility, albeit an unlikely one. As a final thing, India's predicament is a symptom of a more general phenomenon. As the war in Ukraine continues and possibly spirals into a wider conflict between Russia and the West, countries sitting on the fence will come under more and more pressure to choose sides, and this could lead to some interesting geopolitical shifts. So subscribe and turn on notifications to stay up. भारत को केवल अपने हितों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये थी वीडियो, धन्यवाद।